Hello and welcome to the Impact Class 8. So already 7 classes have been done. So today we are going to cover one more new subject that is under GS paper 2. So today we are going to cover basically international relations questions, how to approach IR questions in GS paper 2. तो वो सारा चीज़ आज हम लोग वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे इन दिस सेशन एंड उसके बाद हम लोग 5 क्वेश्चंस भी वी आर गोइंग टू कवर 5 क्वेश्चंस दैट इज कमिंग फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट देम आल्सो लाइक फॉर एग्जांपल. First thing is this. First, whenever the question is coming, we need to understand the demand of the question. Whenever IR part question is there, demand in the sense directive words like analyze, discussions, evaluate, examine, critically comment, what they are asking, that we need to understand. And this thing already we have covered in one of the classes, that is class first itself in the impact classes. So this is already done. The next thing that you need to notice about the theme of the question क्या है. Theme क्या सकता है? It can be bilateral relations like India and Israel relations, India and Japan relations. It can be about regional groupings like for example SCO, BIMSTEC, SARC or NATO, or global governance like regarding United Nations or UNESCO. And then India's foreign policy पे question can be asked, or international organizations like WTO, World Economic Forum इससे related. तो फर्स्ट नेक्स्ट थिंग दैट यही है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द थीम ऑफ द क्वेश्चंस. उसके बाद सब थीम्स भी आ सकता है लाइक रिगार्डिंग वेदर इट इज अबाउट इकोनॉमिक टाइज, trade relations, whether it is about the security concern, whether question is about cultural and diplomatic aspects, or any emerging challenges like climate change. Correct? So this type of questions you will get in international relations. So regarding IR questions, basically you should not focus too much on the books that has been written by various international relations expert individuals. You just follow the newspaper, okay, and that is going to more than enough to answer these questions. Correct? Next thing that you understand is standard approach, what you have to follow in the questions regarding IR part. So first is regarding introduction. So contextual background we have to give an introduction, like for example you have to start with the definitions, any recent event that has taken place like Indian Prime Minister visited recently, if because most often जो भी questions that is coming in the GS paper 2 in IR, they will be from the current affair part only, mostly current affair part only. If they are asking like 4 to 5 questions, like last year in 2024 around 4 questions they were from the international relations. Correct? So they will be on the current affair event. We start with definitions, any recent event that has taken place, or any constitutional articles if applicable, then you can add, okay, in this introduction. If the question is about a bilateral relations like India Japan or India Israel or India USA, then always begin with a brief history or strategic importance. ये बहुत बहुत important है, just star mark लगा लो. You should not write intro in bilateral relations जैसे कि recently like India USA relations की बात आती है, तो you should not start with like this कि recently Prime Minister okay of India visited USA. ऐसा नहीं. You need to bring historic or strategic importance of that relationship always. Always take care. We are going to understand with examples also on the later stage, but this is very very important. Always start with brief history like India and USA share the history regarding the democracy. ऐसा करके कि India is the world's largest democracy, USA is the world's this oldest democracy. This is how you need to use words. If the question is about global governance, global governance, then start with the role of the institutions in the international affairs. Like if question is about like United Nation, or question is about UNESCO, or question is about for example any other like World Trade Organization, then you need to start with the role of the institutions in the international affairs. So that you need to keep in mind these 2 points. These 2 points are very very important in introduction के लिए, ये आपको करना है. Example like India and Japan, okay, share a special strategic and global partnership that has strengthened over the years due to growing economic, defense and cultural ties. So if any question that is coming regarding the bilateral relations between India and Japan, then you can write intro in this manner. The example कैसे लिखना है? Bilateral relations begin with brief history or strategic importance like India and Japan share a special strategic and global partnership that has strengthened over the years due to the growing economic, defense and cultural ties. अब यहाँ पे आपको ऐसे नहीं लिखना है कि recently Japan Prime Minister visited India
current affair orientation you should not give in international relations in the intro part itself. Next is बॉडी आपका जो मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस वी नीड टू डू. जो बॉडी का पार्ट आएगा, बॉडी में क्या करना है, यू हैव टू टेक मल्टीलेटरल डायमेंशंस अंडर इट. सो व्हाट इज मल्टीलेटरल डायमेंशंस? सो डिवाइड योर आंसर्स इनटू डिफरेंट डायमेंशंस बेस्ड ऑन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. सो इफ सपोज एग्जांपल इज बायलैटरल रिलेशंस का क्वेश्चन है, बायलैटरल रिलेशंस लाइक इंडियाज रिलेशनशिप विद अ कंट्री लाइक जापान, लाइक इजराइल, लाइक यूएसए, तो डायमेंशंस में आप पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस ले सकते हो. फर्स्ट, political and strategic dimensions. Here you can discuss about defense ties like Quad, Malabar exercise, global partnership, United Nation reform, border issues, ये सारी चीजें you can add. अगर economic dimensions लेना है, then you can talk about the trade volumes, कि दोनों कंट्री में how much trade is there, FDI का कोई इशू है वहां पे, या any key agreement happen like CEPA या free trade agreement या energy cooperation, जो कुछ भी हो, that you can add in the economic section. So first dimensions कौन सा हो गया, political and strategic. Second dimensions it is economic dimensions that you need to note down. Next dimension जो आपका आएगा that is cultural and people to people context. correct, cultural and people to people contact, that is the next dimensions. यहाँ पे आपको क्या मेंशन करना है, for example any historical ties, Indian diaspora that is there, and educational and tourism links. Indian diaspora पे already question have been asked 2 times, correct, so that is you have to focus. Then security and defense में any military cooperations, military exercise, counter terrorism, cyber security, that related you have to note down. अगर challenges and way forward में any trade deficit is there, any policy roadblocks are there, any regional tensions are there, that you can talk about it. एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे इफ द क्वेश्चन इज अबाउट इंडिया चाइना रिलेशंस, इफ क्वेश्चन इज अबाउट इंडिया चाइना रिलेशंस, देन डिस्कस अबाउट द बॉर्डर डिस्प्यूट, राइट, डिस्कस अबाउट द बॉर्डर डिस्प्यूट लाइक डोकलाम, गालवान, ट्रेड डिपेंडेंसीज इफ इट इज एनी इज देयर, और एनी डिप्लोमेटिक इश्यूज आर देयर लाइक बोर्ड जो BRI रोड इनिशिएटिव्स है, इंडो पैसिफिक टेंशंस आर देयर, यू कैन ऐड दिस मल्टीपल डायमेंशंस. बिकॉज नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि इफ डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के रिलेटेड, इंडिया चाइना, इंडिया ओके, इंडिया यूएसए, इंडिया जापान, इंडिया डिफरेंट कंट्रीज, इजराइल, तो उसमें क्या क्या हमको स्पेसिफिक वी नीड टू ऐड, वी विल डिस्कस दैट लेटर. अगर क्वेश्चन है इंडिया एंड मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, देन कौन से डायमेंशंस आपको दिखना है. इफ द क्वेश्चन इज अबाउट इंडिया एंड मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस लाइक यूनाइटेड नेशन, WTO और IMF, तो इन सच सिनेरियोज में व्हाट डायमेंशंस वी नीड टू नोट डाउन. So first is India's role, like contribution to peacekeeping, climate initiative, global health. इसमें हमको करना है, क्या करना है, contributions to peacekeeping, climate initiatives and global health. Benefits for India कुछ हो रहा है उससे, वो नोट डाउन करना है, like any trade access, diplomatic influence, economic aid we are getting from these countries. Any challenges are there like WTO issues, like subsidy dispute, United Nations reform regarding permanent UNSC seat, demand that, and then way forward reform in global governance, greater representations and consensus buildings के बारे में we need to mention. सेम एग्जांपल्स में है लाइक ए क्वेश्चन ऑन इंडिया इन यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म, तो क्या करना है आपको, डिस्कस इंडियाज डिमांड फॉर ए परमानेंट यूएनएससी सीट ड्यू टू इट्स राइजिंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस, वी कैन ऐड. नेक्स्ट अगर क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग रीजनल ग्रुपिंग्स इन इंडियाज रोल लाइक सार्क, एशियन, क्वाड, ब्रिक्स, इस केस में व्हाट वी नीड टू डू इट एक्चुअली, इनमें जो इंपॉर्टेंट डायमेंशंस वी नीड टू मेंशन, इट इज अबाउट द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस. सबसे पहले कि इंडिया का ज्योग्राफिकल एंड जियोपॉलिटिकल स्टेक्स क्या है इन ऑल द रीजनल ग्रुपिंग में, वी नीड टू नोटिस. देन इकोनॉमिक कोऑपरेशंस लाइक ट्रेड, एनी एग्रीमेंट इज देयर, एनी इन्वेस्टमेंट इज देयर, एनी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स आर देयर, वी नीड टू मेंशन. देन सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स में फॉर एग्जांपल काउंटर टेररिज्म, डिफेंस पैक्ट्स एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी. इन चैलेंजेस में इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड चाइना's इन्फ्लुएंस एंड पॉलिसी differences that we need to focus under regional groupings में. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे जैसे एक क्वेश्चन ऑन इंडिया एशियन रिलेशंस, तो डिस्कस एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स, चाइना's ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन्स. अब इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो व्हाट वी नीड टू मेंशन रिगार्डिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. Again, these things you need to note down in your notebook also. यहाँ पे डायमेंशंस क्या है, हिस्टोरिकल अप्रोच करना है लाइक नॉन अलाइनमेंट, एक पंचशील, लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, हिस्टोरिकल अप्रोच, नॉन अलाइनमेंट, पंचशील, लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी. प्रेजेंट ट्रेंड्स क्या है, मल्टी अलाइनमेंट,
strategic autonomy, and balancing ties with USA and Russia. So the term I am using here like multi-alignment, like strategic autonomy, you need to remember these terms. You have to use these terms. Key areas में climate diplomacy, defense export, technology partnership that we need to mention. Challenges में border dispute challenges there, trade imbalances there, diplomatic frictions are there, and way forward में we can strengthening multilateralisms, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी एंड मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन. एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, एक क्वेश्चन ऑन इंडिया फॉरेन पॉलिसी इवोल्यूशंस डिस्कस फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू मल्टी अलाइनमेंट. क्या था? नॉन अलाइनमेंट टू द मल्टी अलाइनमेंट, रोल इन ब्रिक्स, क्वाड एक्सेट्रा. दैट इज सो. अभी क्या था हमारा हिस्टोरिकल में नॉन अलाइनमेंट था, नाउ वी आर हैविंग ए मल्टी अलाइनमेंट. सो दैट यू नीड टू फोकस. सो दीज टर्म्स जो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. These terms you have to use actually in your IR answers. अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जहां पे फॉर एग्जांपल इट इज ए डिलेमा फॉर इंडिया, which side we need to have, so we will go with multi alignment or strategic autonomy or balancing ties, so that you have to focus. कंक्लूजन में कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जांपल कंक्लूजन हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैलेंसिंग अप्रोच होना चाहिए. लाइक समराइज द डिस्कशंस. जो कंक्लूजन आप लिखोगे उसमें समराइज द डिस्कशंस, provided diplomatic or solution oriented conclusions, quote international reports like United Nations, World Bank, WTO, World Economic Forum, and or use India's foreign policy principles. Like India's foreign policy is evolving towards multi alignment, prioritizing strategic autonomy while fostering partnership for economic growth, global peace, and regional securities. This is the example you can summarize this conclusions. Clear? स्पेशल ट्रिक्स भी हम बताओ उधर टू स्कोर वेल बेसिकली. तो यूज इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरीज एंड डॉक्ट्रिन्स लाइक इंडियाज फॉरेन पॉलिसी प्रिंसिपल्स. यू कैन यूटिलाइज पंचशील, नॉन अलाइनमेंट, मल्टी अलाइनमेंट, वसुदेव कुटुंबकम. हमने देखा है अवर प्राइम मिनिस्टर मोस्ट जो प्लेटफॉर्म में ही यूज दिस टर्म वासुदेव कुटुंबकम. यू हैव टू यूटिलाइज दिस टर्म्स इन योर आंसर ऑल्सो. डॉक्ट्रिन्स में यू कैन यूटिलाइज गुजरात डॉक्ट्रिन बेसिकली इन साउथ एशियन कंट्रीज के कंटेक्स्ट में, नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी, मोदी डॉक्ट्रिन. these terms आप गूगल करके भी देख सकते हो what is the meaning of these terms are there, and you have to use them as much as possible. Then include basically current affairs reports, current data like trades, statistics, latest agreements like India US defense deal or quad meetings, India Russia trade reports, indices भी आपको like global peace index, world bank rankings, all this. use map and diagrams like show India's trade routes, border disputes, और like पर ओके ग्वादर पोर्ट के बारे में है या सेंट्रल एशियन ट्रेड रूट्स के बारे में. यू हैव टू यूज द मैप आल्सो इन जियोपॉलिटिकल लोकेशंस एंड बैलेंस क्रिटिसिज्म एंड ऑप्टिमिज्म बोथ टुगेदर. दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ दिस अवर आईआर पार्ट. कि मैंने एक आपको बता दिया है कि दीज आर द थिंग्स आर देयर that you need to keep in mind while answering the question that is coming from the current affair, sorry, from the IR part. Now we are going to discuss one by one questions regarding the IR. So जैसे एग्जांपल हम लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, टेक द एग्जांपल, रीड दैट क्वेश्चन फर्स्ट. करेक्ट है? तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बेसिकली टॉक्स अबाउट Indo-Pacific region is becoming a major geopolitical and economic battleground. Discuss India's strategic interest in this region. करेक्ट है? क्वेश्चन ये है Indo-Pacific region is becoming a major geopolitical and economic battleground. Discuss India's strategic interest in this region. इसको आप कैसे लिखोगे? जब इंट्रो करोगे इंट्रो, सो इंट्रो में फर्स्ट इज इंडो पैसिफिक, दैट मींस रीजन फ्रॉम द इंडियन ओशियन टू द पैसिफिक ओशियन. इंडो पैसिफिक क्या होता है? दैट रीजन which is coming from Indian Ocean to Pacific Ocean. Mention its geopolitical and economic importance of that region. State India's Indo-Pacific strategy like free, open, and inclusive region. That is introduction. You can write. अब बॉडी में बिकॉज इट इज इंडो पैसिफिक रीजन है तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच वी कैन हैव. लाइक डायमेंशंस में जियोपॉलिटिकल हमने पढ़ा था अभी रिसेंटली, अभी हाउ टू अप्रोच. तो डायमेंशंस में जियोपॉलिटिकल अप्रोच लाइक क्वाड अलायंसेस देयर, क्वाड अलायंस जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए. बैलेंसिंग चाइना, दैट इज सिक्योरिंग रीजनल पीस, वो कर सकते हैं. इकोनॉमिक में आप ट्रेड रूट्स लाइक मलक्का स्ट्रेट्स,
एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एशियन पार्टनरशिप दैट यू कैन यूज, सिक्योरिटी एंड डिफेंस में मिलिट्री कोऑपरेशंस लाइक मलाबार एक्सरसाइज एंड LEMOA एंड ब्लू इकोनॉमी. Challenges में China's expansion, South China Sea issue, US China tensions that you can mention. And then way forward में you can write strengthening Quad, more maritime diplomacy and economic diversification. In conclusion में you can write the answer like India must continue regional collaborations, defense partnerships, quote PM Modi's Indo-Pacific vision that is security and growth for all in the region that is Sagar. फाइनल टेक अवे में आपको क्या लिखना याद रखना है, फाइनल टेक अवे में कि रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, लाइक आइडेंटिफाई इट्स अबाउट ए कंट्री, ग्लोबल इश्यूज, रीजनल ग्रुपिंग, फॉरेन पॉलिसी, वो आपको यूज ए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, अप्लाई मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, सपोर्ट विद करंट अफेयर्स. दैट इज एग्जांपल्स हमने आपको दिया है. नाउ दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ व्हाट आई हैव इंट्रोड्यूस्ड टू यू. नाउ इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस बेसिकली दैट केम इन 2018. क्वेश्चन इज दिस ओनली. India's relations with Israel have of late acquired a depth and diversity which cannot be ruled back. Discuss. फिर से एक बार आप क्वेश्चन को देखो और समझो कि whether you can answer it or not. आप एटलीस्ट टेक 1 minute to think about this question कि क्या क्या dimensions you can add in this particular question. Just do the brainstorming. क्लियर है? सो कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे यहाँ पे? फर्स्ट इज हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन. सो ब्रेकिंग डाउन द क्वेश्चन हियर. सो ब्रेकिंग डाउन द क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, थीम क्या है इसमें, इंडिया इजराइल रिलेशंस. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज अबाउट इंडिया इजराइल रिलेशनशिप के बारे में. वन क्वेश्चन इज हियर कि क्या है क्वेश्चन, इंडिया रिलेशनशिप विद इजराइल ऑफ लेट मतलब रिसेंटली एक्वायर्ड ए डेप्थ एंड डाइवर्सिटी. क्या एक्वायर्ड? डेप्थ एंड डाइवर्सिटी विच कैन नॉट बी रोल्ड बैक नाउ. Discuss. This question came in 2018. How to approach this question? So this question is about bilateral relationship. तो थीम क्या है इसमें? bilateral relationship, इंडिया इजराइल relations. वर्ड क्या है? डिस्कस. डिस्कस मीन्स होता है प्रोवाइड मल्टी पर्सपेक्टिव, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ऑन इंडिया इजराइल टाई. सबसे इंपॉर्टेंट है हाईलाइट की एरियाज ऑफ कोऑपरेशन लाइक डिफेंस, लाइक ट्रेड, लाइक टेक्नोलॉजी, लाइक कल्चर, लाइक एग्रीकल्चर. क्योंकि एग्रीकल्चर के केस में इंडिया इजराइल के बहुत अच्छे रिलेशन है. यहाँ पे वी आर गेटिंग वेरी गुड ओके टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, एडवांस टेक्नोलॉजी. एनालाइज वेदर दीज रिलेशंस आर इरिवर्सिबल एंड व्हाई. ये हमको एनालाइज करना है कि जो रिलेशनशिप है दैट इज इरिवर्सिबल, दैट मींस नाउ वी कैन नॉट गो बैक. whatever the relationship that became, that is having lot of depth and diversity, we need to accept that only. It is irreversible, that we need to discuss. So basically जो focus area है वो depth and diversity के बारे में. So what is the meaning of this term depth and diversity? Depth जब word है इसका simple meaning है how strong the relationship is, that is depth. Diversity means different sectors of collaborations. I hope you understood the term. When we say depth, depth means we need to understand how strong the relationship between India and Israel, and diversity means how many sectors are there जहाँ पे our relations have collaborations like defense, like for example technology, advanced technology like agriculture, like climate change, correct? So that is diversity. Irreversibility means can these ties be weakened now? Can these ties be weakened? That we need to focus basically. This is the question. Up now, since every word you understood, now you read once again this question. I hope now it is easy for you to understand what content we need to add in this particular question in the answer. So question is India's relationship with Israel have of late acquired a depth and diversity which cannot be rolled back. Depth means सिंपल हमने पढ़ा था. डेप्थ मींस क्या होता है कि हाउ एक्चुअली डीप रिलेशनशिप विद वी आर हैविंग विद इजराइल, एंड डाइवर्सिटी मींस हाउ मेनी सेक्टर्स दैट आर इन्वॉल्व. दैट इज द मेन थिंग. अब इसमें हम लिखोगे कैसे? आंसर मैंने बोला था बायलैटरल रिलेशनशिप है. यू हैव टू गो टू हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट. जब भी आप बायलैटरल रिलेशंस के व्हेनेवर यू आर गोइंग टू राइट द इंट्रो,
you need to be give contextualizations as well as we need to write regarding the historical aspects and strategic significance. तो कैसे लिखोगे? इंडिया रिकॉग्नाइज्ड इजराइल इन 1950. अब इसमें आप ये नहीं करंट अफेयर का सबसे पहले बोल दोगे, नो, इंडिया रिकॉग्नाइज्ड इजराइल इन 1950 but full diplomatic ties were established only in 1992. See, such intros you can note down in your notebook. If now any year, if question is coming regarding India-Israel relationship, you can quote the same intro there. 2017 first visit by an Indian PM. यहाँ पे मैंने थोड़ा current event डाला because question came in 2018. So this is 2017. That is the reason this question was asked. First visit by an Indian PM to Israel is strengthening bilateral ties. Relationship now extend beyond defense because diversity we need to choose. Diversity में relationship now extend beyond defense to technology, to agriculture, to water management and cyber security, making them deep and diverse. ये हमारा एक intro हो गया है. So I think if you read this intro and read that question, 100% you will sure कि yes, this introduction belongs to that question only. अब अगर हम बॉडी के पार्ट करें तो मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ इंडिया इजराइल रिलेशनशिप वी नीड टू हैव. मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस में फर्स्ट फॉर एग्जांपल वी दैट डिफेंस एंड द सिक्योरिटी. So defense and security is the one dimension because diversity question is about the diversity, so we need to discuss about different sectors. The first sector is defense and security. Here you can write Israel is India's third largest defense supplier. Key military deals like Barak 8 missile system, Spider air defense, then this unmanned air vehicles like Heron and Harop drones that we are getting from Israel, counter terrorism cooperations like intelligence sharing. That is one sector जहाँ पे our relationship are the defense and security. Next is technology and innovation के field में आते हैं. तो technology and innovation के field में when we are doing this, then India Israel industrial R&D, correct, and innovation fund I4F very important है. I4F means India Israel Industrial R&D and Innovation Fund for joint research. This is very important. Prelims के लिए भी this question can be asked in prelims also. Then collaboration in cyber security, AI and space technology. AI आपको use करते रहना है अभी because this word was used by Prime Minister Modi too many times now. So question can be asked this year the mains exam about the AI. एग्रीकल्चर एंड वाटर मैनेजमेंट, यहाँ पे इंडिया इजराइल एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट IIAP, 30 प्लस सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इन इंडिया, Israel's drip irrigation technology boosting India's farm activity. That is third sector I have discussed. Fourth sector is economy and trade relations. So bilateral trade around $10 billion in 2023. You need to know these numbers also. ये आपको नंबर याद रखने हैं. From 200 million in 1992, ongoing free trade agreement negotiations are happening. Next is geopolitical alignment. क्या है? Geopolitical alignment में strongest ties under this question already have been asked. Okay, in last year only I2 U2, that is India Israel. I2 means India Israel, U2 means UAE and USA. Stronger ties under I2 U2 framework. Geopolitical alignment, India balances Israel with its Arab relations, Gulf nations, and then cultural and people to people contact. So 85,000 Indian origin Jews there in Israel, and growing tourism and cultural exchanges are also there. That is, this is for example body part में we have discussed about the different sectors because question is about depth and diversity. तो हमने depth भी discuss कर ली and diversity भी in this particular diagram itself. Then comes to the challenges because question is about the discuss. Discuss means we need to have multiple perspective. The next perspective is challenges and concern. So when we discuss challenges and concern, then we can add balancing Arab relationship. That is the first challenge. So India's strong energy ties with Saudi Arabia, UAE and Iran. That is one more issue India is having. The main challenge यही है कि somehow balancing Arab relationship also. Then Israel-Palestine conflict is there because India supported two-state solutions avoiding direct interference. So that is another problem. Third problem is geopolitical sensitivities because striking a balance between global alliance and regional stability, that is another. So global geopolitical sensitivity.
करंट अफेयर भी आप ऐड कर सकते हो, लाइक 2023-24 इंडिया इजराइल डिफेंस डील्स, दैट इज इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट, वेस्ट एशिया कोड, सो दैट यू कैन यूटिलाइज इन दिस आंसर। कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे, मैंने बताया। सो इंडिया इजराइल हैव इवॉल्व्ड, दिस यहां से देखो कंक्लूजन, देखो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस में यू हैव टू राइट कंक्लूजन इन सच ए मैनर ओनली, लाइक इंडिया यूएसए टाइज, इंडिया इजराइल टाइज, दिस वे। So India Israel ties have evolved into a strong strategic and multi-dimensional partnership. Future collaborations in defense, AI, cyber tech, clean energy, water management with further strengthened ties. In final verdict आप दे सकते हो इसमें, that is the conclusion. So this was the question number 1 we have discussed. I hope everyone understood about this particular question. So first question I have done it, different dimensions से we have solved it. Now comes to the question number 2. Just read that question number 2 first. Okay, read that question. So question क्या है इसमें? If we go through this question was asked I think in 2024 only. जो ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, this question was asked in 2024. This question 10 mark question. Critically analyze India's evolving diplomatic, देखो ये वर्ड हमने बोला ना हमेशा आ रहा है, देखो बार critically analyze India's evolving diplomatic, economic and strategic relationship with Central Asian republics, highlighting their increasing significance in the regional and global geopolitics. Question is about 10 marker question. क्वेश्चन है क्रिटिकली एनालाइज, क्या है क्रिटिकली एनालाइज, ये है डायरेक्टिव वर्ड्स क्रिटिकल। सो क्रिटिकली एनालाइज मींस क्या होता है, एनालाइज एंड देन नेगेटिव साइड वी नीड टू पुट फोकस मोर, दैट मींस वी नीड टू फोकस मोर ऑन चैलेंजेस साइड। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस इन इंडिया सेंट्रल एशियन रिलेशंस के बारे में, देन हाईलाइट चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस, दैट इज क्रिटिकल वर्ड, क्रिटिकल वर्ड यहीं से आपको आ जाएगा। वी नीड टू हाईलाइट challenges and the limitation these relations, provide then a balanced assessment with the evidence, correct, but we need to put more focus to the challenges and the limitation side. Key theme क्या है इसमें, diplomatic relation, diplomatic means political engagement, summits, treaties. Economic relations means trade, energy, connectivity projects. Strategic relations means security, defense, terrorism and China's influence. Geopolitical importance means, next is geopolitical importance means क्या होता है, रोल ऑफ सेंट्रल एशियन इंडियाज रीजनल एंड ग्लोबल स्ट्रेटजी। ये आपका हो गया के थीम, इसमें के थीम आपको क्लियर हो गया अभी। तो अगर आप क्वेश्चन को पढ़ो फिर से, नाउ एंटायर ब्रेकडाउन आई हैव डन इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, सारा क्वेश्चन का हमने ब्रेक डाउन कर दिया है कि इफ वी ब्रेक डाउन सेंट्रल क्रिटिकली एनालाइज इंडिया इवॉल्विंग, डिप्लोमेटिक में क्या होता है, पॉलिटिकल एंगेजमेंट होता है, इकोनॉमिक में होगा ट्रेड एनर्जी के बारे में आएगा, स्ट्रेटेजिक में क्या होता है, डिफेंस टेररिज्म चाइनाज इन्फ्लुएंस आ जाएगा, जियोपॉलिटिकल में क्या आ जाएगा, रोल ऑफ सेंट्रल एशियन इंडियाज रीजनल एंड ग्लोबल स्ट्रेटजी, दैट इज द क्वेश्चन। I think now it is done to everyone. Everyone is able to understand this particular part. Now we are to run intro part. Intro कैसे लिखेंगे इसमें? Intro I told you context and importance very important, like Central Asia. Central Asia में कौन आएगा, like Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan. These are the countries. So please look this map also. आपको क्या करना है? You need to look the Central Asia map also. And the Central Asia map में एक बार देखना है कि जो border countries हैं, these countries are sharing border with whom, or then any water bodies are there for geography perspective you can check. So Central Asia is crucial for India's regional connectivity, energy security and countering China's influence. Understood? So Central Asia है, this is very important for India's regional connectivity, for energy security and countering China's influence. So if any question that is coming regarding Central Asian countries,
With relationship with India, your intro should remain same only. Then India's Connect Central Asia Policy 2012 and India's Central Asia Summit 2022 have enhanced engagements. अब बॉडी में क्या है, क्रिटिकल एनालिसिस मींस डायमेंशंस डिस्कस करना है, डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल ये सारी. सो फर्स्ट डायमेंशंस वाज डिप्लोमेटिक. सो डिप्लोमेटिक में यू कैन राइट अबाउट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट 2022. सो फोकस ऑन कनेक्टिविटी, focus on trade and security. India's membership in Shanghai Cooperation Organization SCO. Challenges इसका क्या है? Low diplomatic presence. That means only 3 embassies in these 5 nations. जो इंडिया के जो embassy है only 3. Check in internet also कि if any updated data is available or not. Competition from China and Russia, that is one more issue is there diplomatic में. उसके बाद next dimension economic. So key development क्या है? Trade $2 billion mostly with Kazakhstan and Uzbekistan. कितना है? Only $2 billion trade है अपना. And then INSTC International North South Transport Corridor and Chhabar Port. एक बार इसका आप मैप में जाके लोकेशन चेक करना है आपको, ठीक है. टू इम्प्रूव ट्रेड रूट्स, एनर्जी इंपोर्ट्स, कजाकिस्तान यूरेनियम, तुर्कमेनिस्तान गैस, दैट इज तापी पाइपलाइन प्लान, अभी भी प्लान में ही है. चैलेंजेस क्या है इसका? लैक ऑफ डायरेक्ट कनेक्टिविटी, नो लैंड बॉर्डर डायरेक्टली, ट्रेड डोमिनेटेड बाय चाइना, $40 billion विद चाइना ओनली एंड रसिया. अपना कितना ट्रेड है? जस्ट $2 billion, दैट्स इट. And that is also with two countries mostly, Kazakhstan and Uzbekistan, that is KU. Next is strategic and security. Positive side इसका क्या रहेगा? Counter terrorism cooperation, that is SCO RETS framework. Correct? SCO, इसके बारे में पढ़ना जाके SCO RETS framework के बारे में. India training Central Asian forces in counter radicalizations. Defense ties में military training exercise. लेकिन limitation में क्या आएगा? Instability in Afghanistan threatens this regional security. Growing Chinese military influence also. So that is the limitations on negative side. Then regional global geopolitics में क्या लिखना है? Balancing China's BRI in Central Asia, reducing dependency on Pakistan controlled trade routes, and strengthening relations via Quad Plus and I2U2 groupings. आपको क्या लिखना है? Russia's influence in the region affects India's reach. BRI versus India's connectivity plan. There is Jawar versus China's Gwadar port. That is one more thing. Some current affairs से भी आप पार्ट लगा सकते हो. Some examples like India invited all 5 leaders for Republic Day to strengthen ties. Kazakhstan India uranium deals, Jawar port expansions, Tapi gas line on hold due to Taliban influence. ये सब लिख सकते हो. Conclusion में आप क्या लिख सकते हो? Boost diplomatic presence with embassies in all CAR nations, that is Central Asian Republic nations. Increase trade connectivity by this INSTC North-South trade route से Jawar and Iran rail network, strengthen regional connectivity ties and leverage India's soft power like yoga, like Bollywood, IT sector, education, scholarship. That can be your answer basically. Now next question is I2 U2 only. This question was asked in 2023. Read that question. So question is, how will I2 U2, that is India, I means India Israel, U2 means UAE and USA, grouping transform India's positions in global politics? This question was asked in 2023. 15 marker question was, 15 mark question was. So सबसे पहले हमको इसका अप्रोच देखना है, क्या क्या हमको लिखना है. फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट वी नीड टू आस्क. तो टॉपिक बेसिकली ये क्वेश्चन का थीम है, इफ यू नीड, देन थीम इज बेसिकली I2U2 ग्रुपिंग के बारे में. दैट मींस इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएसए. सबसे पहले दिस थिंग यू नीड टू नो. Next is focus how this aligns basically
impact India's global position. How this alliance impact India's global positions? इसमें डायरेक्टिव वर्ड्स का how will means answer should focus on India's transformation due to I2U2. डायरेक्टिव वर्ड्स यही है. How will की एरिया क्या है? What is I2U2? Why was it formed? How does it enhance India's global role? And then challenges and way forward. This is the question. So now if you read this question, you will understand how will I2U2 grouping transform India's positions in global politics. You have to tell this thing. So introduction में बोलो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड इंट्रो आपको देना है. Like I2U2 is a strategic quadrilateral group aimed at economic and technological cooperations among India, Israel. This key focus area अगर इसका हम देखा जाए तो 6 components हैं I2U2 में. Whenever see this is the content part, you must have already go through the content regarding this. Key focus area इसमें water है, करेक्ट. जो आपका की फोकस एरिया है वो 6 कंपोनेंट्स इसके हैं. इन द 6 कंपोनेंट इफ यू चेक इट कितना 6 6 6 में लाइक वाटर फर्स्ट है, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी. दीज आर द 6 कंपोनेंट्स ऑफ दिस I2U2 ग्रुपिंग. वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी. अब इसमें इंडिया पार्टिसिपेशन अलाइन विद इट्स मल्टी अलाइनमेंट अप्रोच एंड एनहेंस जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस. अब बॉडी में जब हम लिखेंगे तो 6 कंपोनेंट्स के बारे में लिखेंगे. ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज ग्लोबल पोजीशन थ्रू I2U2. सबसे पहले वाटर, दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट. सो वाटर में क्या है? कोलैबोरेशन इन वाटर कंजर्वेशन, desaline technologies like Israel and UAE, they have expertise in it, and boost India's water security. Next, energy. So UAE's investment in clean energy projects reduces India's dependence on fossil fuels. Transportation. Enhanced connectivity in West Asia and global trade routes helps in supply chain resilience. Space. Technology sharing with USA and the Israel strengthens India's space diplomacy like Gaganyaan and Artemis Accord. Health. Joint research and innovation in pharmaceuticals and healthcare like COVID-19 lessons are there. Food security. UAE's agri investment in India, tech-driven farming like Israel expertise there, reduce food supply and disruptions. So these are the 6 components. Like water was first, energy was second, transportation was third, space, and then health, and then food security. And based on that impact on India's global role, we can discuss one by one. अब इसमें जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट कहाँ है? तो सबसे पहले कि इट स्ट्रेंथन इंडियाज डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग्स. एग्जांपल, enhance India USA Israel relationship while maintaining balance in West Asia, एक counter China's influence in global supply chain also, and boost economic and trade opportunities like infrastructure energy investment from UAE, and strengthen food security, trade and tech collaborations. Challenges क्या रहेंगे? वही सारे. Balancing relationship with Iran, because I2U2 जो है ना strong pro West orientation can affect India's ties with Iran also. Dependence on USA, India must ensure strategic autonomy and not to seen as fully aligned with USA lead bloc, because Russia will not be happy then. Way forward में आपको है कि leverage I2U2 for domestic growth, focus on make in India, tech and renewable energy. That is the answer. So up to 100 words में easily you can answer this question. Clear this? Now next question. Now read next question. Conclusion same है. Next question is question number 4. Read that question.
तो क्वेश्चन नंबर 4 है, वेस्ट इज फोस्टरिंग इंडिया एज एन अल्टरनेटिव टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन चाइना सप्लाई चेन and as a strategic ally to counter China's political and economic dominance. Explain the statement with example. This is the question. Clear this? The question is easy. West is fostering India as an alternative to reduce dependence on China's supply chain and as a strategic ally to counter China's political and economic dominance. इसको कैसे अप्रोच करें? 10 मार्क क्वेश्चन है, ये कब आया था? 2024 में, लास्ट ईयर ओनली दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड. क्वेश्चन मेन फोकस का क्या? वेस्ट. क्या है? वेस्ट इज फोस्टरिंग इंडिया एज एन अल्टरनेटिव. वेस्ट मींस क्या होता है? वेस्ट मींस यूएसए भी आएगा, यूरोपियन यूनियन भी आएगा, एंड देयर अदर अलाइज सपोर्टिंग इंडिया. सम अंडरस्टूड? So first we need to understand the meaning of each, and West is fostering India. West means you should not consider just USA. You have to consider European Union also and other allies also. Alternative to reduce dependence on China in supply chains. Correct or not? Strategic alliance to counter China's political and economic dominance. This is the question. And word है वहाँ पे explain this statement. Explain means clearly illustrate the reasons behind West support for India. Use examples like economic policies, geopolitical trends and trade shifts. So की इसमें एक क्या कवर करना है? Why is the West reducing dependence on China? एक चीज है. How does India fit as an alternative? Second question है. Third question, key development proving this shift that you have to answer in this particular question. I hope it is clear now. So I have already done this breakdown of this question. So next is model answer. अगर हम इसका देखें कैसे करेंगे. फर्स्ट इज इंट्रो पार्ट. इंट्रो में क्या है? West economic and geopolitical strategy is shifting to reduce reliance on China. West economic and geopolitical strategy is shifting to reduce reliance on China, driven by supply chain vulnerabilities, aggressive expansionist policies like Belt and Road Initiative, Taiwan issue, and trade dispute. India is emerging as a preferred alternative due to economic potential, strategic locations, and democratic values. This is the intro. So this intro you can see in IR part. Mein you can remember the intro and you can use that same intro in some of other questions also. बॉडी में वाई इज वेस्ट रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन चाइना. सबसे पहले सप्लाई चेन रिस्क लाइक कोविड-19 एंड यूएस चाइना टेंशंस एक्सपोज्ड ओवर रिलायंस ऑन चाइना. लाइक सेमीकंडक्टर इशू आ गया था, इलेक्ट्रॉनिक्स का आ गया था, रेयर अर्थ मेटल्स का प्रॉब्लम आ गया था. दैट इज द केस. पॉलिटिकल एग्रेशन, China's action in Taiwan, South China Sea border dispute with India create global security concern also. And then economic manipulations like China's debt trap diplomacy via Belt and Road Initiative threatens developing nations' sovereignty. This is the reason. Clear? Next is India is emerging as an alternative. कैसे India's role है? Like manufacturing, जिसको बोलते हैं चाइना प्लस वन. ये बहुत फेमस कोट है, चाइना प्लस वन. चाइना प्लस वन अल्टरनेटिव का चाइना. चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी इज शिफ्टिंग इंडस्ट्रीज फ्रॉम चाइना टू इंडिया. चाइना प्लस वन क्या होता है? चाइना प्लस वन सिंपली मीन्स दैट shifting industries from China to India like Apple, Samsung, Tesla, they are going to invest in India. Technology and semiconductor, India semiconductor policy like Vedanta, Foxconn chip plant you can use as the example, aims to reduce Western dependence on China for chips. And then defense and security में आ जाओ. India USA foundational defense agreement like this strategic, and then trade alliance you can use like India is a part of Indo-Pacific economic framework, and infrastructure logistic. India is a key partner in the Indian Middle East European Economic Corridor IMEC, reducing reliance on China's border and road initiative. Example of the shift from China to India like Quad Alliance, US, India, Japan, and Australia enhance this. Apple's China plus one strategy. Apple shifted 25% of iPhone productions from China to India,
like Foxconn and Wistron. US chips at India semiconductor push, joint Indo-US semiconductor production to okay this reduce China's dominance, supply chain resilience initiative SCRI, Japan, Australia, India strengthening supply chain independent of China. That is you can write. Conclusion में आप लिख सकते हो West is strategically investing in India as a democratic, as a stable and growing economy to counterbalance China's dominance. India's manufacturing rise, basically trade, partnership, defense, all this you can write this. So this is the content part. अगर आपके पास इतना सारा content होगा, then it is easy for you to answer. If you are not aware about the content, then it will be difficult for you. Last question of the today's session. Today is the fifth question we are going to discuss. Just read the question. Question क्या है basically? Question है the expansion and strengthening of NATO and stronger US Europe strategic partnership work well for India. What is your opinion about this statement? Give reasons and example to support your answer. 15 mark question 2023 का है. ये 2023 में आया था क्वेश्चन. सबसे पहले फोकस का एक्सपेंशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ नाटो एंड स्ट्रॉन्गर यूएस यूरोप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वर्क वेल फॉर इंडिया. व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस स्टेटमेंट? कि स्टेटमेंट सही है या गलत है? गिव रीजंस एंड एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर. अगर आपको लगता है सही नहीं है तो उसका सपोर्ट करो. इफ यू थिंक इट इज गुड फॉर इंडिया यू हैव टू सपोर्ट दैट. मेन फोकस क्या है? नाटोज एक्सपेंशन एंड यूएस यूरोप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये चीज है. सेकेंड पार्ट है इसका implication for India. That means what are the opportunities are available and what is the challenges are there. And then your opinion, it should be balanced perspective with regions and examples. Directive word क्या है? Give regions and example. This is the directive word. And then आपको करना है present argument with facts and example to support the analysis. Cover both positive and negative aspect. Key area क्या है? How NATO and US Europe tie impact India's geopolitical standing. This is the first part. पॉजिटिव एस्पेक्ट में लाइक सिक्योरिटी, इकोनॉमिक बेनिफिट एंड बैलेंसिंग चाइना. चैलेंजेस में क्या है? रसिया टाइज, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, राइजिंग टेंशंस विद चाइना. देन करंट अफेयर टू सब्सटेंशिएट दैट आर्गुमेंट. देन योर आंसर इज रेडी. सिंपल. देन योर आंसर विल बी कंप्लीट रेडी. अगर हम इसका मॉडल आंसर देखें क्या है, इंट्रोडक्शन में 30 to 40 वर्ड्स में लिखना है कि एक्सपेंशन ऑफ नाटो एंड स्ट्रॉन्गर यूएस यूरोप पार्टनरशिप आर रीशेपिंग ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स. Directly हमने questions I have picked up some sentences directly from the questions and we used as a intro part here. While this realignment strengthens collective security, stabilizes the global economy and counter China's expansions, it also complicates India's relationship with Russia and the strategic autonomy. ये हमने एक मोटा intro part पे have covered them. अब इसमें body part में what we need to cover is positive impact of NATO expansion in India. That we need to write. So positive में क्या होगा? सबसे पहले benefit for India लिखना है, then negative limitations लिखना है. जैसे और example also we need to give. So first positive impact is containing India. Sorry, China. We need to contain China. This is the first important factor we need to note down here. Containing China. So यहाँ पे West renewed focus on China aligned with India's security concern. Correct? लाइक क्वाड इंडिया, उसमें इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी इंडिया, यहाँ पे भी आपका इंडिया ही है. रीजनल स्टेबिलिटी में अगर देखें, स्ट्रेंथन रूल्स बेस्ड ऑर्डर, यस. डिस्करेज चाइनास एग्रेशंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन, यस. यूएस सपोर्ट इंडिया पोस्ट गालवन क्लैश. देन स्ट्रॉन्गर इंडिया यूरोप टाई. कैसे होगा? यूरोप व्यू इंडिया एज ए की पार्टनर एमिड राइजिंग चाइना कंसर्न. यूरोप जो है इट व्यू इंडिया एज ए की पार्टनर amid rising concern. Example like India European Trade and Tech Council 2023. Economic stability क्या हो जाए? NATO's role in global security help stabilize market, indirectly benefiting India's economy. Stable oil prices post Russia sanctions negotiation, that is the one benefit India is having. उसके बाद next is benefit access to technology like India US defense agreement, all this. Negative impact क्या होगा? That also we need to challenges for India. सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होगा रसिया चाइना एक्सिस स्ट्रेंथनिंग. वेस्टर्न प्रेशर आइसोलेट रसिया, पुशिंग इट क्लोजर टू चाइना. दैट इज नॉट गुड फॉर इंडिया बिकॉज रसिया चाइना ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ, ब्रिक्स एक्सपेंशन हुआ. देन स्ट्रेन ऑन इंडिया रसिया रिलेशनशिप. India's traditional defense tie with Russia that is weakened because we are going more closer to the USA.
रसिया डिलेइंग सप्लाई ऑफ S-400 मिसाइल्स, अभी तक हमको S-400 मिसाइल नहीं मिला है, दैट इज एग्जांपल. India's strategic autonomy at risk, because aligning with West could limit India's independent, non-alignment foreign policy. Like BRICS and SCO membership balancing act. Increased pressure to join NATO plus. US may push India now towards security alliances, reducing flexibility. US proposal to add India to NATO plus framework. Rising US-Iran tensions. It also could impact India's Chabar Port energy security if there is a lot of tensions that is growing between India, US and Iran. Like US sanctions on Iran affecting India's. Current affairs में आप लिख सकते हो. NASO's 2023 NATO की जो 2023 लिमिट, US reaffirmed that India Pacific strategy indirectly benefit India. India's stand on Russia Ukraine war maintaining neutrality despite pressure from the West. Correct. Then India's Middle East Europe economic corridor also, India US defense deal also, and right now we are working for India US trade deal also. Conclusion में आप लिख सकते हो कि while NATO expansion benefit India in countering China and stabilizing the economy, it also poses diplomatic challenges with Russia and autonomic concern. India must balance relations by leveraging partnership like Quad, BRICS, I2, U2 while maintaining a multi-aligned foreign policy. That is the end of this answer. So this was basically the fifth question that we have discussed in today's session, that was on international relations. Now one more session that I am going to take regarding international relations questions, जिसमें फिर से I am going to cover around 4 to 5 questions. So total 10 questions will be covered from IR part, and some other tips I will discuss in that impact 9th class, that is next class only, कि अगर कोई क्वेश्चन किसी लाइक बायलेटरल और फॉर एग्जांपल रीजनल ग्रुपिंग का आता है, देन हाउ यू हैव टू आंसर. टिल दैट आपको ये सारे नोट्स बना लेना है, बिकॉज दे विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर रिवीजन ऑल्सो. थैंक यू.